वेलकम टू एग्जाम क्रैक यूट्यूब चैनल। आज आम भिडियो इंडियन पॉलिटीर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया टॉपिक किसी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आलोचना करवा। फर्स्ट क्वेश्चन हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, बी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सी इरिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, डी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। The right answer is the Government of India Act 1935. Question number 2. The first attempt to introduce a representative and popular element in the governance of India was made through A. Indian Council Act 1861, B. Indian Council Act 1892, C. Indian Council Act 1909, D. The Government of India Act 1935. The first attempt to introduce a representative and popular element in the governance of India was made through option E. Indian Council Act 1861. Question number 3. Which of the following acts introduced communal electoral in India? A. Indian Council Act 1861, B. Indian Council Act 1892, C. Indian Council Act 1909, D. The Government of India Act 1935. The right answer is Indian Council Act 1909. प्रश्न नंबर 4. By virtue of which act डायरकी was introduced in India? क्यों आक्ट अनुजाई डायरकी सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस करा जाइथिला? ए. इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। द राइट आंसर होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5. द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950 एज ए. फंडामेंटल राइट्स, बी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, सी. फंडामेंटल ड्यूटीज, डी. emergency provision. Right answer option number B, directive principle of the state policy. Question number 6. The Government of India Act 1935 was based on option A. The principle of federation and parliamentary system, option B. The principle of succession of the British Indian provinces, C. Acceptance of the idea of a constitution assembly to draft a constitution. The right answer is option A. The principle of federation and parliamentary system. The Government of India Act was based on the principle of federation and parliamentary system. Question number 7. The monopoly of Indian trade of the East India Company was abolished by the option A. Regulating Act 1773, option B. Charter Act 1813, option C. Charter Act 1833, option D. Government of India Act 1858. The monopoly of India trade of the East India Company was abolished by the Charter Act 1830. Option B is the right answer. Question number 8. Consider the following acts. 1. The Regulating Act, 2. The Pitt's India Act, C. The Charter Act, 4. The Council of the Indian Council Act. What is the correct chronological order? को ऑर्डरटा ठीक हे? तो फास्ट आसीला रेगुलेटिंग एक्ट राइट अच्छी, सेकेंड पिट्स इंडिया एक्ट राइट अच्छी, थर्ड चार्टर एक्ट ठीक अच्छी, 4 नंबर इंडियन काउंसिल एक्ट यहाँ ठीक अच्छी। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो राइट आंसर जोटा कि 1, 2, 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 9. With reference to the colonial period of India, the trade monopoly of the East India Company was ended by. को रेगुलेटिंग एक्ट रे भारत रे जो कॉलोनियल पीरियड टाइम रे जो मोनोपोली ट्रेड होता सेटा ईस्ट इंडिया कंपनी ताको ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ट्रेडटा केबे बंद करा जाइथिला, केबे खत्म होइथिला? ऑप्शन सी. द चार्टर एक्ट ऑफ 1813. Two independent states of India and Pakistan were created by the Simla Conference, B. The Cripps Proposal, C. The Cabinet Mission Plan,
D. The Indian Independence Act. Two independent states of India and Pakistan were created by the Indian Independence Act. Option number D is the right answer. Question number 11. The first definite step to provide parliamentary control over East India Company was taken by option A. The Regulating Act of 1773. Option B. Pitt's India Act of 1784. Option number C. The Charter Act of 1793. Option D. The Charter Act of 1813. Option number A is the right answer. The Regulating Act of 1773. Question number 12. The Montagu-Chelmsford Report formed the basis of A. The Indian Council Act 1909. B. The Government of India Act 1919. C. The Government of India Act 1935. D. The Indian Independence Act 1947. The right answer is the Government of India Act 1919. The Montagu-Chelmsford Report formed the basis of the Government of India Act 1919. Montagu-Chelmsford Report को बेसिस रे फॉर्म करा जाइथिला ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हिसाब रे. Question number 13. Through which one of the following were commercial activities of the East India Company finally put to an end? Option A. The Charter Act of 1793. The Charter Act of 1813. The Charter Act of 1833. D. The Charter Act of 1853. The right answer होची the Charter Act of 1833. Question number 14. Which of the following vested the Secretary of State for India with supreme control over the Government of India? A. Pitt's India Act 1784. B. Government of India Act 1858. C. Indian Council Act 1861. D. Mulley-Minto Reforms 1909. Which of the following vested the Secretary of State for India with supreme control over Government of India? The right answer होची Government of India Act 1858. प्रश्न नंबर 15. डायरकी वाज फास्ट इंट्रोड्यूस अंडर द्वैत शासन व्यवस्था जोटा कि डायरकी सारा प्रथम केबे इंट्रोड्यूस करा जाइथिला इंट्रोड्यूस अंडर का अंडर इंट्रोड्यूस करा जाइथिला? ए. मल्ले-मिंटो रिफॉर्म्स. बी. Montagu-Chelmsford Reforms. C. Simon Commission Plan. D. Government of India 1935. तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी Montagu-Chelmsford Reform. प्रश्न नंबर 16. In the Federation under the Act of 1935, residuary powers were given to the A. Federal Legislature. B. Provincial Legislature. C. Governor General. D. Provincial Governor. In the Federation under the Act of 1935, residuary power is given to the option C. Governor General. प्रश्न नंबर 17. The Indian legislature was made bicameral for the first time by A. Indian Council Act of 1892. B. Indian Council Act of 1909. C. The Government of India Act 1919. D. The Government of India 1935. The Indian legislature was made bicameral for the first time by the Government of India Act of 1919. प्रश्न नंबर 18. Which of the following acts was described by Jawaharlal Nehru as Charter of Slavery? A. Regulating Act of 1773. B. Pitt's India Act of 1784. C. Government of India Act 1919. D. Government of India Act 1935. को आर्ट को जवाहरलाल नेहरू चार्टर ऑफ स्लावरी बोली डेस्क्राइब करथिले तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. प्रश्न नंबर 19. इन व्हिच ईयर डिड द पार्लियामेंट एडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? केउं वर्ष भारतीय संविधान को पार्लियामेंट एडॉप्ट करथिला? इन व्हिच ईयर डिड द पार्लियामेंट एडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान को पार्लियामेंट केबे बा संसद केबे ताको एडॉप्ट करथिला? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर जोटा कि 1950. क्वेश्चन नंबर 20. व्हिच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी एट द सेंटर? द्वैत शासन व्यवस्था को केंद्र रे केबे इंट्रोड्यूस करा जाइथिला? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909.
ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे अनुଯାयी द्वैत शासन व्यवस्था केन्द्र रे इंट्रोड्यूस करा जाइथिला। क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। ऑप्शन ए पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी जॉन साइमन। व्हिच वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन किए जड़े एम किए जड़े कैबिनेट मिशन रो मेंबर नथिले। तो राइट आंसर हो जॉन मिशन। क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, डी नन ऑफ द अबव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो आम भारतीय संविधान प्रणयन कोटा गोटे बहुत बड़ सोर्स थिला। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। प्रश्न नंबर 23 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन डिसेंबर 9 1946, जनवरी 26 1949, जनवरी 26 1950, नवेम्बर 26 1951। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स जो भारत संविधानटा केबे कार्य आरंभ होइथिला जनवरी 26 1950 रु। प्रश्न नंबर 24 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेट अप बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। द राइट आंसर इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेट अप बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। प्रश्न नंबर 25 द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन द मॉर्लेमेंट रिफॉर्म्स 1909, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन द को स्कीम रे प्रोवाइड करा जाइथिला कि जो आमर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट रे हबो कहिकी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। आज लास्ट प्रश्न द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव द रॉयल असेंट्स ऑन ऑप्शन ए जुलाई 18 1947, ऑप्शन बी जुलाई 19 1947, ऑप्शन सी जुलाई 20 1947, ऑप्शन डी जुलाई 21 1947। राइट आंसर है ऑप्शन ए जुलाई 18 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव द रॉयल असेंट। भिडियो को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद।